So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel Fistry with me. बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि भाई आज हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस प्लेलिस्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी कोर्स में ये प्लेलिस्ट अगर आपके पास है, आपके एज ए सब्जेक्ट है HRM, सो आपको चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके हर टॉपिक हर कोर्स के लिए कहीं ना कहीं कवर्ड होंगे आपके लिए, स्पेसिफिकली MBA BBA BCom। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्लेलिस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पहली वीडियो जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं HRM के बारे में। सो this is going to be one of the most important video of this playlist. So let's start this lecture, but I hope कि चैनल में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन दबाएंगे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें, इस तरीके की वीडियोस की जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट human resource management only on Fistry with me. Let's start. So the very first thing that comes in our mind when we talk about HRM or human resource management is like, what exactly is human resource? If you are someone, which I don't think or expect from you कि आप होगे, you're definitely a college student if you're seeing this video, बट इफ बाई चांस अगर आपने अपने किसी भैया दीदी या किसी भी पापा या किसी भी इंसान से अगर आपने सुना है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, अगर वो जॉब कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ इस बात से आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है, आज इसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल जाने वाला है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्लाइड दैट वी आर गोना अंडरस्टैंड हियर, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि भाई जब हम बात करते हैं किसी कंपनी की, जब हम बात करते हैं किसी फर्म की, तो आप मुझे खुद बताओ कि भाई कोई कंपनी किससे बनी होती है। डेफिनेटली उसका कुछ बिजनेस करने का तरीका होता है, वो तो हम जानते हैं। किसी चीज़ के लिए वो डील कर रही होती है, मे बी फॉर एनी स्पेसिफिक गुड्स और मे बी एनी सर्विस। सो मे बी दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस, मे बी दे आर प्रोवाइडिंग कमोडिटीज, सो दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग। नाउ ऑर्गेनाइजेशन में इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, भाई हर जगह है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो पीपल ही तो हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से इट्स मेड ऑफ पीपल। सो बिकॉज एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज समहाउ मैनेज्ड बाय पीपल। सो directly indirectly organization, it is made of people, and we can't even think of any organization where people are not there. You can see the very first point here written, बहुत ही आसान भाषा में नोट्स को बनाने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई चीज़ों को, तो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स की मदद से ही समझेंगे। ध्यान से समझो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन किससे बनी होती है, लोगों से बनी होती है, एंड वी कांट इवन थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन where there are no people, because organization, it is made of people. Somehow directly or indirectly things are managed in the organization. That's all because of people. So out of these people we can say कुछ managers होते हैं. If you'll see a proper structure of any organization or a company, we have number of companies, big companies, so you'll see there are managers, there are employees, then there are top management, basically lower management. If you're going to divide it into three categories, it's going to be top level management, bottom management, and lower management. So basically some of them are managers, मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, some of them are employees, they are basically working together to achieve a common goal of organization. And what's that common goal of organization? It depends on organization to organization. Maybe they want to increase their sale, or maybe they want to enhance their branding, maybe they want to achieve that particular profit. So different organizations or companies or firms have different, we can say, their different goals that depends on the organization and organization to organization. So ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो पहले पॉइंट में हमने यही समझा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनी है, लोगों के बिना ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं। वी कांट इवन थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर आर नो पीपल। समहाउ किसी ना किसी चीज़ में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पीपल इन्वॉल्व ना हो, लोग इन्वॉल्व ना हो, लोग इन्वॉल्व हैं ही, ठीक है। When it comes to managing the organization, the second point I'm reading, when it comes to managing the organization, what we are trying to focus on here is the management function, which we have understood in the playlist Fundamentals of Management. You need to understand this thing कि जब हम बात करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाए, सो आई हैव ऑलरेडी
posted, or we can say I have already uploaded number of videos. I think 33 or more than 32 or 31 videos in Fundamentals of Management playlist, where I've talked about in detail about planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So I've talked about in detail about all of them in the playlist Fundamentals of Management. So if you haven't watched that playlist, you can watch it. Link is in the description box. So basically, when it comes to managing the organization, जब हम बात करते हैं organization को manage करने की, what we are trying to deal with, or what we are trying to convey, is that we're basically talking about the 5 management function here. What are those? प्लानिंग करेंगे हम, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे हम, स्टाफिंग करेंगे हम, डायरेक्टिंग करेंगे हम, कंट्रोलिंग करेंगे. नाउ व्हाट एचआरएम डील्स विद, व्हाट एचआरएम इज ऑल अबाउट इज स्टाफिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई पूरे मैनेजमेंट को अगर हम देखें, मैनेजमेंट को मैनेज करने को अगर हम देखें, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने को हम देखें, तो वो होगा इन मैनेजमेंट फंक्शन से. दैट वी हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, कंपनीज फॉलो करती हैं, तभी एक स्मूथ फंक्शनिंग हो पाती है ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों की. सो डेफिनेटली इट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड एचआरएम इज ऑल अबाउट द थर्ड मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग. Just keep this in your mind now, that HRM, it's all about the third management function we have talked about here, staffing. Now, staffing में क्या क्या आता है? Now, अब क्या है HRM बेसिकली, अब हम समझेंगे अगर ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है. सो नाउ विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन रिसोर्स. टिल नाउ यू हैव एन आइडिया कि ऑर्गेनाइजेशन, इट कांट बी, you can't make any organization without people being there in that particular organization. And when it comes to managing the organization, what we really talk about is a 5 management function, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And staffing, that's a third management function, and HRM is all about that. So let's understand and let's go again. What is human resources again? So HRM, it's the process of, ध्यान से समझो, नाम से ही क्लियर है यार, as a name suggests itself. What is the name? Name क्या है? Human resource management. Definitely, an organization is made of people. So organization में लोग काम कर रहे हैं, that is the human resource. How you are managing that human resource, because organization is made of human. So whatever you're going to do, you're going to do around humans. So managing the humans, basically from the start, like recruiting them, then making policies for them, the procedures for them, that how they're going to work, making a proper environment so that they can work in a proper way, the health facilities that the company is going to provide, that those persons, the work life aspects, so many aspects, the plans, the work life plans, and so many things. These are all related to human resource management. Why? Because it is related to human resource in the management. So as the name suggests, human resource management, that means here you have to deal with the human resource, or we can say more appropriately, you have to deal with the management of human resource. इससे अच्छा I don't think so मैं आपको समझा सकता हूँ आसान भाषा में. So HRM, or we can say human resource management, it is the process of recruiting people. And it's not just about recruiting people, but it deals with everything which revolves somehow around people that you have hired in the organization. So starting from the hiring of those people, then giving trainings to them, then making plans for them, policies for them, giving proper facilities to them, whatever the policies are, be it the insurance policies or healthcare facilities which companies or MNCs are providing to the employees. So whatever the aspects are which are related to the human resource in the management, वो सारे HRM में आते हैं. So that's why I've written here, HRM is the process of recruiting people, giving them proper training, compensating them, so it's whole salary structure, making policies relating to work life or other aspects,
and making plans so that it can be retained. Making plans for them so that it can be retained in the near future also in the company. So that's all human resources all about. Now let's understand what exactly is the role of human resources. कि भाई हम समझ गए कि भाई human resources में क्या आता है, but role क्या है human resource का? What exactly is the role of human resource? क्या role ये play करता है? So let's understand the role. So human resources. Let's understand आगे. So one of the most important task in HRM is recruiting people. So देखो, जो सबसे मेन और प्राइमरी टास्क देखें हम HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ें, शुरू होती है चीज़ें, वो यही है, लोगों को रिक्रूट करना. एंड इट्स नॉट अ ईजी टास्क. ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क. एप्रोप्रिएट प्रॉपर कैंडिडेट ढूंढना एक प्रॉपर जॉब रोल के लिए, उस जॉब रोल के लिए वो फिट कर पाएगा या नहीं, ये तय करना, उस हिसाब से फिर रिक्रूट करना, दैट इज वेरी क्रूशियल स्टेप. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एचआर आपने देखे होंगे कि भाई आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे. सो एचआर आपको कॉल करते हैं, एचआर आपसे पूछते हैं कि भाई हाँ ये आपका नाम पूछेंगे. लेट्स सपोज आपने किसी जॉब इंटरव्यू में अप्लाई किया, सो लेट्स सपोज आपका रेज्यूमे एचआर को सही लगा, अप्रोप्रिएटली लगा फॉर द जॉब रोल दैट यू हैव अप्लाइड. सो वो आपको कॉल करेगा, एचआर आपको कॉल करेगा, एचआर आपसे पूछेगा आपकी कुछ मे बी अबाउट योर क्वालिफिकेशंस एंड फर्दर आपको फर्दर राउंड के लिए बेसिकली सेलेक्ट करेगा. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एचआरएम इज रिक्रूटिंग पीपल. इस डिपार्टमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है लोगों को रिक्रूट करना, और फिर लोगों को आगे तक, जब तक वो कंपनी में सेटल नहीं हो जाते हैं, उसके बाद तक कहीं ना कहीं उनके इश्यूज और जो भी चीज़ें हैं लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज रिलेटेड टू द ह्यूमन एस्पेक्ट, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करना वो सारा एचआर डिपार्टमेंट ही करता है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एचआरएम इज रिक्रूटिंग पीपल. You need people in organization, and you can't say technology is there, so I'll only focus on machines. So basically what is written here is कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ज़रूरत पड़ती है. You can't say कि भाई I have technology and I'll use technology, I'll use AI and I don't need people. किसी ना किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए आप मशीन नहीं लगा सकते हो. किसी ना किसी चीज़ के लिए, उन मशीन्स को मैनेज करने के लिए भी यू नीड ह्यूमंस. सो डेफिनेटली यू नीड पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन. And that's why I've written here that you can't say कि भाई technology is there, so I'll only focus on machines and not on human power. Because you need to understand this thing, in order to perform a task and get the work done, staffing is important. अगर आपको टास्क को परफॉर्म करवाना है, काम को करवाना है, डेफिनेटली स्टाफिंग करनी होगी, लोगों को रिक्रूट करना होगा. सो स्टाफिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. दैट इंक्लूड्स दैट हाउ मेनी पीपल यू नीड टू हायर, प्रॉपर हायरिंग प्लान्स क्या होंगे, किस तरीके से आपको हायर करना है, देन कितने पार्ट, मतलब बेसिकली कितने राउंड्स होंगे इंटरव्यू के, एक किस तरीके का प्रोसेस होगा इंटरव्यू का, एंड देन द होल नेगोशिएशन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू कि किस तरीके से हमें सैलरी के लिए नेगोशिएट करना है, और एक प्रॉपर मार्केट प्राइस जो है कहीं ना कहीं हमें ऑफर करना है कहीं ना कहीं, एंड देन द इल्यूमिनेट और द ट्रेनिंग्स जो दी जाती हैं. सो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हैं एचआरएम में, और एक इम्पॉर्टेंट रोल है एचआरएम का. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि यू नीड पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन. यू कांट से कि भाई टेक्नोलॉजी एंड एआई है एंड वी हैव मशीन्स टुडे, सो वी डोंट नीड पीपल, बिकॉज समहाउ you need people in order to perform tasks and to get the work done, and for that staffing is really important. That means you need to hire people, and that involves that how many people you are hiring, what is the proper hiring plans, the process of interview and the negotiation process, and then once that particular person is hired, then about the training plans for that particular person, how you're going to train that person to perform that specific job or role. So these are all the important things which are involved in human resource management. Now one of the most important step is that it helps in hiring people and giving them proper trainings and negotiation process, the whole things. The second thing is making workplace policies
and that is also a very important step in organization कि you are making workplace policies, because at the end of the day the environment they are going to work is very very important, because जिस environment में वो काम करेंगे वो decide करेगा उनकी productivity को, so definitely और उनके mental status को भी तो definitely making workplace policies is also important, and it's a very important step in any organization. ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक proper rule बना रखा है जहाँ पर employee को काम ही काम करना है दिन भर, ऐसा नहीं है, proper plans बनाने हैं, प्रॉपर आपने ब्रेक्स का भी सिनेरियो बना रखा है कि यू कैन टेक ब्रेक्स ऑल्सो, यू कैन टेक 1 hour और 1.5 hour ब्रेक, एंड आप प्रॉपर प्लान कर रहे हो कि भाई बीच बीच में ये फन एक्टिविटीज़ होंगी. सो दीज आर द थिंग्स विच आर ऑल डिसाइडेड बाय द एचआर मैनेजमेंट. So making workplace policies, that's a very important step in any organization by the HR department, just to ensure कि जो culture है organization का as well as its employees, they get motivation. So definitely that is very important. Now for this, not only HR department but every department ensures that whether the policies are followed or not, and it's a responsibility of every department, true, कि वो along with the HR department काम करे और ensure करे that whether these policies are followed or not. So it can be information security policy, it can be ethics policy, dress code, etc. ये सारी workplace policies भी कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं HR department के द्वारा, human resource management के द्वारा, एंड ये हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करे कि भाई ये पॉलिसीज़ जो हैं, whatever the policies are, the security policy, the ethics policy, the dress code policy, whether they are followed or not, it's a responsibility, it's a duty of every department in the organization, and the manager has to ensure that their employees are whether they are following it or not. So definitely ये workplace policies बनाना, ये सारा काम भी HR department का ही होता है. Next thing, HRM department or the concerned people must ensure that the compensation they are going to provide, ये भी एक important role है HR department का कि भाई जो compensation वो provide करेंगे to the new hires or maybe the employees जिनको वो hire कर रहे हैं, वो according to the market स्टैंडर्ड्स हो या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हो, ऐसा नहीं कि वो कम जो है वो ऑफर कर रहे हो टू द एम्प्लॉयज़, फेयर हो, वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन द कॉम्पनसेशन. सो HRM डिपार्टमेंट्स और द कंसर्न पीपल ही ये इंश्योर करते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है उनका कि द कॉम्पनसेशन पार्ट that they are going to provide to the employees, it must be fair, it meets industry standards, and is motivating enough so that people can work with motivation in an organization. They can provide incentives for the extra work that they are going to do. So ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं HRM डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है. The facilities or the compensation, the normal salary that they can provide to the employees also comes under this. So HRM department is the department that basically or discusses about these things and decides some things. Now not only compensation but other employee benefits as well, like it can be health insurance, it can be incentives, it can be bonuses, it can be leaves, the leaves that they're going to provide. Like some companies provides good leaves and employee can take leave whenever they want, when they are in need, definitely. So these are the things which are basically discussed, and it is concerned with the HRM department. Now once you have hired your employee, HRM must ensure proper training, and that's also one of the important role कि भाई HRM ये ensure करे कि बंदा train हो पा रहा है या नहीं, बंदे को access मिले हैं चीज़ों के नहीं. So now once you have hired your employees, HRM must ensure proper training of employee. कई जगह demystifying होते हैं, training modules दिए जाते हैं, एक particular websites बताई जाती है जहाँ पर आप उस company की जहाँ पर आप जाके training modules देख सकते हैं, छोटा सा test ले सकते हैं. So definitely HRM must ensure the proper training of employees, जिससे जो एम्प्लॉय है वो पूरी तरीके से सजग हो जाए अबाउट द पॉलिसीज़, अबाउट द प्रोसीजर्स. अब वो ट्रेनिंग अलग अलग हो सकती है, एक प्रॉपर एक बेसिक ट्रेनिंग भी होती है, एक जनरल ट्रेनिंग भी हो सकती है. अब वो ट्रेनिंग कई तरीके की हो सकती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, अनकॉन्शियस बाइज वाली ट्रेनिंग, सो डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो है वो हो सकती हैं, और एक ट्रेनिंग प्रोसीजरल ट्रेनिंग भी हो सकती है पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के लिए. सो ट्रेनिंग कैन बी वर्क रिलेटेड और अदर ट्रेनिंग्स रिलेटेड टू एथिकल इशूज़ इन अ वर्क प्लेस, जस्ट एन एग्जाम्पल.
So human resource department, it must be aware of all the laws related to the workplace. अब human resource department को पूरी जानकारी होनी चाहिए of all the laws which are related to the workplace, directly or indirectly. Laws like discrimination related कि भाई किसी भी तरीके का discrimination नहीं दिखना चाहिए on the basis of gender or on the basis of caste or anything like that, or hierarchy like something like this. Worker safety से related law, healthcare से related law, work life balance से related law. If there is a rule like कि भाई 9 hour काम करना है, so you can't say कि you have to work 10 hours in a day, and you can't generate that particular pressure to the employee. Labor laws. So human resource department, it must be aware of all these laws. Last but not the least, excellent communication that is required, and not only communication skills but management skills as well. So HR department के लिए it's very important कि एक proper communication skill हो, जिससे वो communicate कर पाए इन policies को, इन procedures को, इन सारी चीज़ों को, as well as not only the communication skills but excellent management skills are required to भाई कितनी अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को. सो इन अ वेरी जनरल सेंस, येलो पॉइंट में आप देख सकते हो कि येलो पॉइंट में जो लिखा है, in a very general sense, we can say HRM is all about recruiting, selecting, then giving training. किसको? लोगों को जिनको आप रिक्रूट कर रहे हो. So basically HRM is all about recruiting, then selecting, giving training, making policies to ensure fair practices in organization, working on employees' welfare through different practices, managing the workforce environment, managing the people, stick with people in their difficult times, and listen to them. That's very important. Listen to them and their issues. So I hope you got an idea HRM के बारे में. So now let's talk about HRM versus personnel management. So now let's understand what exactly is personnel management and how it is different from human resource management. Very clearly you need to settle this thing into your mind कि भाई personnel management, it's a part of management that deals with the recruitment part. अब आप बोलोगे भाई recruitment part तो वहाँ पर भी था, staffing वगैरह तो वहाँ पर भी था. किस तरीके से ये अलग है HRM से फिर, या किस तरीके से अलग हुआ अगर दोनों चीज़ें सेम ही हैं. सो ध्यान से समझो. पर्सोनेल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का एक वो पार्ट जहाँ पर हम डील करते हैं विद द रिक्रूटमेंट. दैट इज हाउ वी गोना रिक्रूट द एम्प्लॉय, द स्टाफिंग पार्ट, डेवलपमेंट एंड द कॉम्पनसेशन ऑफ द वर्क प्लेस. ऑल्सो द वे पीपल कैन बी यूटिलाइज, किस तरीके से हम लोगों को यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज humans are the only resource in the organization which we can utilize in a way जिससे हम maximum output generate कर सकते हैं. यूटिलिटी इस तरीके से करवा के हम आउटपुट को इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं जिससे भला हो मैनेजमेंट का, कहीं ना कहीं बेटरमेंट हो मैनेजमेंट का. फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So personnel management, it's a part of management that deals with the recruitment part, staffing, development, and the compensation of the workplace. Also, the way people can be utilized so that they can become more valuable to the organization. अब याद जो चीज़ आपको रखनी है वो ये है कि remember not to confuse yourself when it comes to the role of HRM. Don't confuse yourself when it comes to the role of HRM or what HRM deals with, because HRM, it's a much wider area, or we can say here we study much more things than what we study or what is covered by the personnel management. So remember not to confuse yourself when it comes to the role of human resource management, because HRM is a wide area of study. Personnel management, it is just a subset of it. It is just a subset of human resource management. And in personnel management, first of all, it is just a subset of human resource management, where what we only dealt with is administration part. So हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से, ऑफिशियल पार्ट से डील करते हैं रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, टू द स्टाफिंग, टू द डेवलपमेंट एंड द कॉम्पनसेशन ऑफ द वर्क प्लेस. Also how the people can be utilized so that they can become more valuable to the organization. All of these things, basically it deals with the administration part. Now personnel management is having limited scope. इसका जो स्कोप भी है, इसका जो दायरा है, कहीं ना कहीं वो लिमिटेड है. वो इतना फैला हुआ नहीं है, इतना ब्रॉड नहीं है. सो
Basically it is having limited scope. The workers here are viewed as a tool. यहाँ पर वर्कर्स को जो कि मैंने अभी बात की कि भाई लोगों को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि वो ज़्यादा यूजफुल बनाए जा सकें फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा वैल्यूएबल बनाए जा सकें टू द ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स कि पर्सनल मैनेजमेंट लोगों के लिए एक व्यू जो रखता है वो एज ए टूल रखता है कि भाई लोग क्या है, एज ए टूल है, ह्यूमंस जो हैं, दे आर द वर्कर्स, बेसिकली द एम्प्लॉयज, दे आर व्यूड एज ए टूल हियर. While in HRM, if you talk about, here the employees are considered as resource, the most important asset we can say of the organization. HRM में हम अब देखो बहुत फर्क है, पर्सपेक्टिव का बहुत फर्क पड़ता है और परसेप्शन का बहुत फर्क पड़ता है. कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये पर्सपेक्टिव बना के चलोगे कि भाई लोग एज ए टूल आपके लिए हैं, तो आप उसी तरीके से लोगों का इस्तेमाल करोगे. इफ यू कंसीडर पीपल एज रिसोर्स और काइंड ऑफ एन एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसी तरीके से चीज़ों को समझोगे और लोगों के लिए मैनेज करोगे. सो डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट HRM, इट कंसीडर्स पीपल एज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट फोकसेस ऑन एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉय, देयर वेलफेयर एज वेल, the compensation part, the training part, the demands of them, the performance appraisal or whatever the training which we are going to provide, the company is going to provide, and all these requirements of the employees is what we deal with here in personnel management. So here workers here are viewed as a tool in personnel management, but in HRM they are asset. HRM focuses on everything which is related to the employee, from their performance part to their compensation part, everything around which the employee is working, the workforce, the policies, safety, so many aspects. Basically यहाँ पर many होगा, so many aspects, and that's the reason we say how broad it is and its function is. So that's how broad HRM is, and that's how we can differentiate it with the personnel management. I hope you got an idea. So many things are there. Let's talk about some few more things. Personnel management, it uses traditional approach. एक traditional approach रखता है, उसकी thinking भी traditional है कहीं ना कहीं, where it considers people to be basically the tool for the organization and how we're going to utilize them to, for the benefit of the organization or to make use of them in a most possible manner. So personnel management की जो thinking है वो भी traditional है, approach भी traditional है. Just now we have talked about that it considers employee as a tool, and that proves my point. On the other hand, when we talk about HRM, is a modern concept which organizations are opting for better management. If you'll see बिग कंपनीज और इवन स्मॉल कंपनीज, स्टार्टअप्स जो कंपनीज को इस्टेब्लिश कर रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रॉन्ग इनफ रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करानी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यू गोना डील विद पीपल ऑल्सो. पीपल you have to make policies work for them in a better manner. So definitely HRM better होना चाहिए, strong enough होना चाहिए for that. So in personnel management, how we are going to pay the employee is decided by the job they are assigned for. पर्सनल मैनेजमेंट में कि भाई एम्प्लॉय को हम कितना पे करेंगे ये कौन डिसाइड करता है, जिस जॉब के लिए उनको असाइन किया गया है वो. बट इन HRM it is decided by the performance evaluation of the employees, that if the employee is performing good enough, we're going to pay them better and we're going to provide them extra benefits or extra incentive. So definitely approaches जो हैं वो personnel management और HRM के अलग अलग हैं. So blue point अगर हम देखें, we can conclude this section by saying that what we primarily focus in HRM is that workers are the asset of the organization, and in order to make your organization a success, you must focus on them and the activities around them. And talking about personal management, it only focuses on activities like recruitment, training, remuneration in a very general sense, basically the administration part. So it's not that much broader. Now let's talk about HRD, Human Resource Development. Let's understand this कि भाई बड़ी आसान भाषा में यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं और लिखने की कोशिश की आपके लिए. वी आर क्लियर विद वॉट HRM इज टिल नाउ. हमें बिल्कुल साफ है ये चीज़ कि भाई HRM क्या है. दैट HRM इंक्लूड्स एवरीथिंग. एक बार फिर अगर नहीं क्लियर है तो समझ लो कि भाई HRM इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट समहाउ रिलेट्स विद एम्प्लॉइज.
किसी ना किसी तरीके से, if it is related to employee, HRM is basically responsible for that. So we're clear with what HRM is till now. So if something is related to employee and if something relates to around the employee, so definitely is dealt by the HRM department. As a name itself suggests, it's all about managing the humans or the employees in the workplace. So if you look at any organization, I'm talking about HRM. So if you closely look at the name itself, it suggests human resource management, that you're managing the human resource. And if you look at any organization closely, mostly everything is around the people who are working in it. The policies are made around them and for them. The procedures, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, the policies are made around them or for them. The procedures are to be made for them. Their queries, the environment in which they're going to work or they're working, then the benefits to be given, the benefits given to them over their general compensation and so many things. So they are all the part of HRM. Now, what we are going to talk about here in this section is HRD, that is Human Resource Development. Now, HRD क्या है? ये एक पार्ट है HRM का, तो हम कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ HRM और वी कैन से द सबसेट ऑफ HRM. तो एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, विच प्राइमरली डील्स विद द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट. तो HRD में बस इतना याद रखो कि किससे डील करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि भाई जिन एम्प्लॉयज को हमने हायर किया, अब उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें. अब वो ट्रेनिंग जॉब स्पेसिफिक भी हो सकती है और एक जनरल ट्रेनिंग भी हो सकती है. So once the person is hired for a role, he or she is given a specific training for that job role and that comes under it. So वो सारा पार्ट कौन कवर करता है? HRM का ही एक पार्ट है HRD, Human Resource Development. So specifically or specially ये डील करता है with the training and development of the employees, and that's why the name itself is Human Resource Development, that you are developing those humans, those human resources that you have hired in the organization by giving them training modules. So not only job specific training, but other development programs too are provided, which provides opportunity. माफ कीजिएगा, बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, but opportunity नहीं है यहाँ पर, opportunity होगा. So not only job specific training, but दूसरे development programs भी जो है वो opportunity provide करते हैं ताकि जो एम्प्लॉई है वो नई चीज़ें सीख सके, एंड विच हेल्प्स देम बेसिकली टू ग्रो बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली. सो आई होप यू गॉट अ लिटिल आइडिया अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. Like, let me tell you my story. Like, when I've joined my first company as an intern, which was basically a multinational company. So during the first 3 weeks, they told me to complete some training modules, which are basically assigned to me, and that I can those training modules I can access to from the website of that particular company or through the link that they've provided me. So they told me to complete some training modules which were assigned to me for my understanding regarding the way I'm going to work in the organization, or the information about the quality and how it is important in an organization, the information about privacy, teachings about the biased behavior in the organization or information technology, the importance of privacy, all these things. So the thing is that these training programs will definitely helped me to see things work in the organization, to see how things work in the organization. So definitely in training programs ने काफ़ी मदद की यहाँ पर होना चाहिए. So these things यहाँ पर basically होना चाहिए. So the thing is, यहाँ पर things नहीं होगा, thing होगा, करेक्ट कर लेना. तो definitely जो trainings program मुझे बताए गए, जो मुझे करने थे by the Human Resource Development, वो उन्होंने मुझे हेल्प की किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में समझने की. बेसिकली हेल्प मी टू सी हाउ थिंग्स वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वी नीड टू कम्युनिकेट, नीड नहीं होगा, नीड होगा, व्हाट आर द फेयर प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सो मेनी टीचिंग्स दैट हेल्प मी कॉन्टीन्यूसली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इन हैंडलिंग सिचुएशंस. कि वो बात चली गई तो अब अनकॉन्शियसली भी
मैं उन चीज़ों के लिए अवेयर हूँ कहीं ना कहीं, वही कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, बट इवन देन आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ द थिंग्स. सो डेफिनेटली दीज टीचिंग्स हेल्प मी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इन हैंडलिंग सिचुएशन. अब कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टी.वी. राव, पता नहीं क्यों इतनी सारी मिस्टेक्स मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ई नहीं होगा, आर होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग की स्पेलिंग लेट मी राइट इट हियर फॉर यू. ACCORDING. This is what the spelling of this according is. So according to Professor T.V. Rao, HRD क्या है? It's a process by which employees of an organization are helped in a continuous and planned way. HRD एक प्रोसेस है जिसकी मदद से बेसिकली हमें ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट क्लियर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं. वो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी हो सकती है और जनरल ट्रेनिंग भी हो सकती है. सो HRD एक प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से प्रोफेसर टी.वी. राव ये कह रहे हैं, जिसकी मदद से एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इनको काफ़ी मदद मिलती है एंड दे आर हेल्प्ड इन अ कॉन्टीन्यूअस एंड प्लान्ड और कंटिन्यूअस वे में इनको हेल्प मिलती है टू एक्वायर. पहला पॉइंट, टू एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एसोसिएटेड विद देयर प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स. अब जिस जॉब के लिए वो असाइन हुए हैं बेसिकली उसके लिए जिन कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है. लेट सपोज आप जिस पर्टिकुलर जॉब में आप असाइन हुए उसमें मान लो एक्सेल की ज़रूरत है, तो आपको पहले 1 महीने आपको लेट सपोज एक्सेल सिखाई जा रही है. सो डेफिनेटली टू एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एसोसिएटेड विद देयर प्रेजेंट और द एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स, वो दैट व्हाट HRD डील्स विद. दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटीज़ एज इंडिविजुअल्स डिस्कवर. यहाँ पर डिस्कवर होना चाहिए था, तो आप एंड हटा देना ये, ठीक है, ये एंड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो एंड हटा देना, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं. आई होप आप याद रखोगे इतनी सी चीज़, ठीक है, कि एंड नहीं होना चाहिए यहाँ पर. सो बेसिकली इट डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटीज इज इंडिविजुअल एंड डिस्कवर्स एंड एक्सप्लॉइट देयर ओन इनर पोटेंशियल फॉर देयर ओन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर्पज. तीसरा, इट डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जहाँ पर एक HRD बेसिकली जहाँ पर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट पे फोकस कर रहे हो, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप करता है जहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो हैं उनकी रिलेशनशिप डेवलप होती है, टीम वर्क देखने को मिलता है, कोलैबोरेशन देखने को मिलता है अमंग द सब यूनिट्स. And so basically it develop an organizational culture in which superior subordinate relationship, teamwork and collaboration among subunits are strong and contribute to the professional well-being, motivation and pride of employees. So that is also important. Another thing is, let's talk about the objectives of HRD. सो जल्दी से हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की. सो सबसे पहला तो यही है कि इट हेल्प्स इन इनहेंसिंग द टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड डेफिनेटली इफ़ यू गोना गिव trainings and proper training, procedural training, general trainings to the employees, it will enhance their talent, whatever talent they already had regarding the job specific job role or anything like that. It definitely is going to enhance that. So it helps in enhancing, यहाँ पर enhancing होना चाहिए था, it helps in enhancing the talents of the employees by developing their overall personality develop करता है. और ना सिर्फ वो उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बारे में सीखते हैं बल्कि और भी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के बारे में सीखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में सीखते हैं, किस तरीके से उनको काम करना है विद इन द टीम, वो टीम वर्क के बारे में भी सीखते हैं, वो इंटीग्रिटी के बारे में सीखते हैं. सो डेफिनेटली इट इन्हेंसेस ओवरऑल पर्सनैलिटी टू. Number 2, it provides a systematic framework for the development part in the organization. एक हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे में रहना ज़रूरी, ऑर्गेनाइजेशन में हौच पौच की स्थिति ना पैदा हो, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मैस ना क्रिएट हो, उसके लिए ज़रूरी है एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क हो, एक तरीका हो, उस तरीके को फॉलो किया जा सके. ना वंस द पर्सन इज़ हायर्ड उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए जाएँ. सो दैट्स व्हाट HRD डील्स विद एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ सबसेट ऑफ HRM. तीसरा, it helps to increase the capability of employees, which overall helps them to grow both professionally and personally, because definitely they're learning new things. They're learning so many things which are other than technicality of that particular job role, or other than those things which are actually involved in the job role, there are things like communication, teamwork, or
the way they need to work, even in pressure conditions, or in deadlines. So definitely they're learning new things which are basically helping them to grow personally also and professionally too. Professionally तो वो definitely grow करेंगे, and it helps them to grow personally also in their life. Number 4, HRD managers मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़. HRD मैनेजर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें कि वो और अच्छी तरीके से काम कर सके. सो दैट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नॉलेज. तो डेफिनेटली ये नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड करता है, पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड्स को इंक्रीज़ करता है फॉर ऑल द पीपल वर्किंग इन एट ऑल लेवल्स in a business. HRD stresses on motivating people. How? By satisfying higher order needs. So basically HRD जो है ये इस बात पर जोर देता है कि भाई हमें लोगों को मोटिवेट करना है उनकी हायर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई करके. And the last thing that I'm gonna say, and one of the objective of HRD, that it makes the employees more efficient, and it's one of the goal of HRD कि भाई लोगों को, employees को efficient बनाना, which definitely is going to be useful for the organization or for the betterment of the organization. So these are the objectives of HRD. So that is it. We have talked about so many important topics in this lecture. अगर आपको lecture समझ में आया है तो आप comment करके मुझे ज़रूर बताइएगा. काफ़ी मेहनत की गई है इन slides में. कोई भी गलती अगर मेरे से हुई है तो definitely I'm sorry for that. And keep watching my videos, keep sharing it with your best friend. I'm not saying कि भाई हर दोस्त से share करो, but you can share it with your best friend. We'll see you in the next video. Till then, take care. Goodbye.